So lotus tea is the national tea. Yes, Lotus national. और मैं और लोटस तो गायब है. Ducks ही ducks, इतनी सारी ducks. What the fuck? So lotus tea is the national tea. Yes, Lotus national. Okay. Okay. That's why every morning in the summer season, in June and July, we'll go to the pond where we plant our own lotus and bring the lotus here for the workshop. So it's like a very nice way we think of to spread our passion and like to share with the friends over the world about our national tea, the lotus tea. I think is it? Okay. Okay. Here we are. Oh, is that? I put the plucking here. So I sit here. 1 minute, I come to the tea house. Oh. Okay. So where are we going exactly? To our hometown in 40 kilometers off of here. What's the name of the village? Folong? Okay, some village. समय हो रहा है 5:45 और हम पहुंच गए हैं इनके गांव में. गांव तो बढ़िया है, एसी लगे हुए हैं. Be careful. Dog shit. Where are we going? To the pond. To the ponds. What are we going to do? This is the sour fruit that we often have in a hot pot or the broth. You see the fruit. Fruit, yeah. Oh okay. The broth one. Yeah. Yummy. Yes. You can try smelling. It's sour. It's very sour. It's actually not. It's interesting. It's very similar. It has a very nostalgic taste. It's sour sweet actually. We use it to put in the broth. Like after boiling steaming the vegetable, we put it into the broth to make it very nice taste. ये फेंक के मार देने. ओह, डक्स तो खा गई. कुछ भी खा रही है डक्स. अरे नहीं, लड़ाई हो रही है. गेम हो गया. अरे ले गई. फुटबॉल हो रहा है भाई. जैसा कि काफी फेमस कहावत है, क्यूरियोसिटी किल्स द डक एंड दे विल ऑल बी किल्ड. एंड बढ़िया इनके फ्राइड राइस के साथ खाया जाएगा. So these are your ponds. Nice, very beautiful. Depth. कमल ही कमल खिले हैं. मोदी जी का कमाल है ये कि आज वियतनाम में भी कमल खिले हैं. वाह वाह. So we have to find her dad, father-in-law. Hanoi. I think वहाँ पे कुछ तो मूवमेंट हो रही है. Yes. He's there. See? It worked. That's a pomelo. Pomelo. Oh, nice. ये है कटहल का पेड़ और ये है बहुत सारे ऑक यानी कि स्नेल्स which we'll eat later. It really ruined the ponds, so we even sometimes. Can I throw it in the river? No, just look.
तो अभी क्या है कि इनका ऐसा पहाड़ों पे टी प्लांटेशन भी है, वहाँ से मतलब पूरा हैंड पिक टी ये यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनके हनोई से कुछ 40 किलोमीटर दूर इनके अपने लोटस पॉन्ड्स हैं। तो ऐसे 5 पॉन्ड्स हैं और उसमें लोटस उगते हैं। तो ये लोग लाइक रोज़ तो नहीं बट आज आए हैं, कल भी आएंगे। तो सुबह सुबह आते हैं बिकॉज लोटस सुबह ब्लूम करता है और उसमें भी काफ़ी ऐसा इट हैज़ टू बी द राइट लोटस, इट हैज़ टू बी इन दैट राइट शेप एंड साइज़। सो ये लोग लोटस पिक करते हैं और यहाँ से वापस ड्राइव करके जाते हैं। उसके बाद आई थिंक 9 बजे कोई इनकी सेरेमनी टाइप की है। और अभी क्या है, अभी सीज़न आने वाला है, जब मेन सीज़न होता है तो बहुत सारा लोटस आता है। मतलब ऐसा पूरा 5 पौंड भर के लोटस आता है। उसके बाद भी उससे सिर्फ 30 किलो चाय ही बनती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी चाय बनाना भी प्रोसेस है। तो अभी क्या ये बता रही थी कि जैसे अपन क्या जोमेटो आ गया है, डिलीवरी ऐप्स इतनी आ गई है, लॉजिस्टिक्स ई कॉमर्स इतना बढ़ रहा है, तो लोग क्या करते हैं गाँव में, दे वॉन्ट टू डू इट बिकॉज उसमें पैसे भी ज़्यादा मिल रहे हैं, राइट। और ये मतलब थोड़ा खेती बाड़ी वाला काम नहीं है। तो यहाँ पे भी यही सीन है। तो यही कह रही थी कि सब लोग ऐसा डिलीवरी बॉय बन गए या फिर ग्रैब ड्राइवर बन गए हैं, है ना। तो अभी क्या है कि इनको वर्कर नहीं मिल रहे हैं। तो जो ये लोटस प्लग करने वाला काम है ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो अभी क्या है कि इनके पापा लाइक इसके फादर इन लॉ और इसके अंकल, ये दोनों मिलके ये लोटस प्लग कर रहे हैं, इनकी हेल्प कर रहे हैं। बट वो काफ़ी ओल्ड है, 70 साल के हैं। तो वही कह रहे हैं कि मतलब अब ज़्यादा दिन तो ये नहीं हो पाएगा, कुछ तो कोई तो हमको चाहिए। नहीं मतलब मैं नहीं करूँगा बट ऐसा जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और लोग करना नहीं चाहते ये ना। तो इतना आसान मतलब काफ़ी मुश्किल जॉब तो है, वैसे लग भी रहा है। अरे वाह, ये आ गए लोटस। ओह शिट, ये मर गया स्नेल। स्नेल इज़ गॉन। बहुत खुशबू तो आ रही है, खुशबू तो बढ़िया आ रही है। अब आ रही है, इतनी देर से नहीं आ रही थी। लिटिल बॉक्सेस मेड ऑफ टिकी टाकी। ओह शावर, लाइक अ शावर। सो ये इसके पापा लोटस प्लग करते हुए आ रहे हैं। xin chào. Dạ, hôm nay chỉ có 5 khách thì chắc là khoảng tầm 10 lá đã đủ ạ. Do you know we make curry out of this also? Curry? Yeah. Really? Yeah, okay. Yeah. No, now I know what कमल ककड़ी is. ऐसे कभी खुद जाके कमल ककड़ी नहीं निकाली। वाओ, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अंकल, 70 साल की उम्र में रोज़ सुबह उठ के कमल तोड़ते हैं। बड़े क्यूट एंगल, पापा लोग क्यूट ही होते हैं नहीं। स्वीट maybe I eat it directly. But you have to just take the liquid. Mm. And then Wow. you put the skin out. Okay. You were late. Wow. It's actually very tasty. तो गुड डेज वर्क। यहाँ पे हमारे पास हैं फूल और हमने बहुत सारे अपनी टोपी में फ्रूट्स भी कलेक्ट कर लिए हैं विच आर वेरी वेरी टेस्टी। और अब हम जाएंगे वापस आ रही जनता। गांव तो सही है, मतलब लोग कम है बट गांव तो बढ़िया है। बट खो गया हूँ मैं, यहाँ तो रास्ता ही खत्म हो गया। ओह नो, लोटस गिर गया, शिट। लोटस, ये कौन से फ्रूट्स हैं? पोमेला 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 है तो मिल गई, गाड़ी तो मिल गई। तांबेत तो गाड़ी तो मिल गई हमें। ये अब वापस चलेंगे हनोई और थोड़ा सोएंगे। So the processing is very complicated and taking lots of manual workings from the picking part, from the tea prepared in the spring season in high mountain, and then for the main process of blending them together. So we will have to pick
all the petals out of the flower. We will pluck the pad inside, the yellow pad inside out, and we start picking each single pollen, a very tiny part inside the flower, and then layer of tea, layer of the pollen again and again, mixing together in 2 days. And then we dry the tea in 1 day, and then we filter the dried pollen out and put the new pollen in, like about 7 times like that for a process of making the lotus tea. Then we will wait for next 6 months to let the fragrance of tea and the lotus being very harmonized together. That's why the lotus tea that you're drinking in a tea house is the lotus from last year. So this year we're preparing for the next year actually. So it need like very big patience on both processing and waiting to enjoy it. Done.